Hey guys, welcome back. आज अपन रेसिपी देखेंगे. तो right now I'll make a new window. I'll name it as recipe. ठीक है. And I'll change the color to, let's say, this. Okay. Now I'll just maximize it all the way down. ठीक है. It's done. Now I'll take a button. I'll duplicate it. अपन क्या करेंगे रेसिपी में, अपन दो कलर बनाएंगे. ठीक है. आरजीबी से, मतलब रेड ब्लू एंड येलो से अपन पर्पल और वॉलेट बनेंगे. ठीक है. तो राइट नाउ मैं इसको वॉलेट दे देता हूँ. सो दैट्स अ वॉलेट एंड दैट्स अ पर्पल, PURPULE, पर्पल. ठीक है. नाउ व्हाट विल डू is we'll set here strings and I'll double click here, cancel, cancel. I'll do action all. I'll load recipe. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये फाइल नेम है अपना. फाइल नेम अपना किस में रहता है, डबल इन्वर्टेड कोड में रहता है. ठीक है. फाइल नेम and we have unit name and then we have recipe name. So for recipe name we'll take what is it, button, that is our button is wallet. I'll take wallet, VIOLET. I'll make it mix one and file name. I'll have to make a file name. I'll do this later. Right now I'll convert and validate and okay. सो राइट नाउ अपन क्या करेंगे ना, रेसिपी मैनेजर में जाएंगे. ये अपना रेसिपी मैनेजर है. फाइल न्यू, ये अपना आ गया अभी. तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रेड लिखूँगा, ब्लू, येलो एंड दिस विल बी एनालॉग. ठीक है. नाउ रेसिपी डेफिनेशन, रेसिपी, दिस विल बी आवर मिक्स वन and this will be our mix 2 and this will be 10, this will be 20 and this will be 30. And we'll do here, oh, 30 is missing, 30 is there, 40, 50, 60. Now this is done. I'll do the next one, unit 1. Something is missing. What we'll do, this is our unit now, so we'll type mix 1 and this will be our mix 2. Okay. Now we'll take x, y, z, x, y, z, and what we'll do here is our PURPLE. This is purple and this is violet, VIOLET. Okay, fine. We'll save this. Enter. Now file, save. I'll save it as let's say auto, and I'll save it. Minimize. I'll go to the folder, and there's my auto. I'll copy this address. I'll go here. I'll go here. Action. I'll go here. I'll paste it, and I'll name it as I'll just give forward slash, and I'll see the name.
Auto is in capital, so AUTO dot CSV will be small. So now I'll just copy this, Control plus C. Okay, okay. Now I'll go in purple action. Now I'll make it mix 2, and this will be, is this solid? Now this is purple. PURPLE. This is purple. Okay, and purple is in capital PURPLE. Purple. I'll convert, validate. We have script. Okay, okay. I'll take now text. When we go in runtime, if I press valid, it will display our value, and when I press purple, purple is not working. I'll tell you why. We mixed up purple. That's why. PURPLE. So we do have purple. I'll save it. File. Save. That was our mistake. PURPLE. Now I'll check here also. I'll go in action. PURPLE. It is correct. Now in runtime, I'll press purple. Now there is a value change. I'll show it to you again when we go in runtime. Okay, now I'll just open it and we go in runtime. We do have this. Initially, we have nothing. We'll just load our recipe of making wallet color, and it will be appearing here. And let's suppose I want to make purple now. So I'll click on purple. It will specify the content of RYB. This is it. This is what recipe does. Now, what I did is I made a visual representation of what I want. तो अपने पास में तीन कलर हैं, रेड येलो ब्लू. इससे अपन एक तो वॉलेट कलर बनाएंगे, नहीं तो पर्पल कलर बनाएंगे. ठीक है, तो ये तीन एक फिक्स रेशो में जाएंगे, जिससे फिर ये मशीन है, मशीन चालू रहेगी तो अपने को ब्लिंक करके बताएगी कि भैया अपनी मशीन चालू हुई करके. ये मशीन चालू करने का स्विच है. सो नाउ when we go in runtime, इनिशियली अपन ने कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की है. ठीक है. राइट नाउ यू कैन सी मेरा स्विच है, मेरे मशीन बंद है. नाउ लेट्स सपोज मेरे को वॉलेट बनाना है. मैं सेलेक्ट करूँगा वॉलेट का कलर, दैट इज रेड 40, येलो 50 एंड ब्लू 16. ठीक है, ये अजम्पशन पे चल रहा है. ठीक है, मैंने अजम कर लिया कि मेरा ये क्वांटिटी से मेरा वॉलेट बन जाएगा करके. नाउ आई विल स्टार्ट द मशीन एंड मेरा कलर बनना चालू हो जाएगा. लेट्स सपोज नाउ मैं मशीन रोक देता हूँ. मेरा ऑर्डर पूरा हो गया है एंड मुझे पर्पल पूरा करना है. तो राइट नाउ मैं पर्पल सेलेक्ट करके फिर से ऑन कर दूँगा, तो मेरा पर्पल कलर बन रहा है अभी. दैट इज इट फॉर रेसिपी. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.